Hello guys, welcome back to my channel Entrepreneur Talks. So I am the hoster of this channel and let me introduce myself. I own two of my startups which are now successful, and I have been working in this field since 4 to 5 years and over 3 to 4 startups, of which two of them has got success. Okay, so let me start today with the concept of the basics of the startup, like what is the basic necessity of the startup to grow. Okay, so first of all, my point is the core idea and validation. Okay, the you startup must solve a real time problem. I mean, it should solve a problem which is been faced by the people in their daily to daily life. Okay, so yeah, it must solve the problem, like it shouldn't be any kind of hypothetical. मतलब उसको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए. ठीक है. लगभग 30 to 35% स्टार्टअप फेल होता है इसी वजह से, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं है. वो सिर्फ एक हाइप बन जाता है, मतलब वो रियल दुनिया का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस वही है. ठीक है. और उसका बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन द मार्केट रिसर्च व्हाट यू नीड टू डू, you need to gather some direct feedbacks or through surveys or any kind of interviews. You can go through it, and many of the websites provides also, I can provide all the details of it also. I have also gone through all these things. Okay. And the second most important point comes as the legal structure and foundation. I mean, the legal matters should be always established in a good kind of the way, or else after your startup got success also you can face a much kind of legal problem, which I have also faced in my previous times and all. Okay, so in the legal foundation and structure, what is the most necessary thing? Okay, you must have a founders agreement. Okay, I mean, one of the important thing I must ensure, if you are you will be just having 2 to 3 ऑप्शंस. मतलब तुम्हारे पास 2 से 3 ऑप्शन रहेगा. आप प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, एलपीपी मतलब कर सकते हो, या फिर पब्लिक लिमिटेड जो भी है वो कर सकते हो. अगर तुम मोस्ट ऑफ द थिंग में प्राइवेट लिमिटेड ही पहले प्रेफरेबल है, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, आपको 2 फाउंडर का ज़रूरत पड़ता है, तो आपको 2 फाउंडर देखना पड़ेगा. ओके, दैट्स द वन ऑफ द थिंग. एंड द नेक्स्ट लीगल थिंग इज फाउंडर्स एग्रीमेंट. Okay, you will be having, means I mean, you have to do all kind of the agreement with your second founder partner. Like what kind of the agreement? You will be splitting the roles. I mean, which sector you will be doing and which sector your partner will be doing. And the equity splits. Equity means who will be the owner. I mean, तुम्हारा पास कितना शेयर रहेगा और उसका पास कितना शेयर रहेगा. Okay, and the schedules and the dispute regulations, those were the basics of the thing. I mean, you will be doing it easily. Okay. And the main thing that I was telling, the business registration, you should register your company under a private limited, LLP, or a proprietorship. You can get the more information in the government, or just you can DM me up, or you can write me in the comments, then I will be explaining it out. Okay, one more thing I need to ask, I need to tell, that you can give me any of the single doubts, and you can post it in the comments or something, and if I get a good kind of response, I will be starting my own Instagram also. Then over here you can just ask me directly, and I will be obviously solving your one-to-one problems. Okay. Okay, so let's move to the third point. It's like product development. Okay, product development is something I mean, you should ensure that the product has some kind of the features or thing that will attract people. I mean, you should do something different so that the people find it more interesting, or kind of that thing. I mean, you can get it understanding, right? Okay. And one more thing, you should ensure that it is really doing solving a real time problem, like fixing bugs or anything, that kind of thing. Okay. And if we move to the second last step, it's the financial setup. You should, this one is the one of the most important thing. For this thing, most of the startups fail, 30 to 40, 50%. Okay, the thing is that capital strategy is one of the most important thing. Over here, what you need to do, you should I mean, make a calculative way where your funds are going and where the funds will be utilized, and you should do with your two partners, I mean you and your partner. Okay, and the management also should be done in two of you, means in front of two of you. There must not be any kind of thing that why I am doing, or I mean, you can understand what I am trying to tell. आपका दोनों का बीच में कुछ झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा. ठीक है, कैपिटल स्ट्रेटजी मैंने समझा दिया आपको. उसके आप कैसे कर सकते हो, मतलब आपका पास 2-3 रास्ता होगा. पहले कि आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो, लेकिन सेल्फ फंडिंग हम लोगों के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो कि मैंने फेस किया था. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए था, क्योंकि सेल्फ फंडिंग मैं नहीं चाहता था कोई करे. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, फंडिंग रेज कर सकते हो,
या मतलब फंडिंग रेज़ करने के लिए भी 2-3 ऑप्शंस होता है, तो मैं वो डिटेल में बता दूँगा, जिसको भी चाहिए होगा मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है? और उसका 2-3 ऑप्शन होता है, मतलब तुम एंजल इन्वेस्टर से कर सकते हो या फिर वेंचर इन्वेस्टर से कर सकते हो और लोन ले सकते हो। लोन तो फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप है या कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं कि लोन मिल जाएगा इजीली, तो वो मैं आपको बढ़िया से गाइड कर दूंगा। मैं वो चीज़ फेस करके आया हूँ, ठीक है, वो बता दिया मैंने। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ओके, सो लाइक इट्स काइंड ऑफ बेसिक थिंग, इसमें तो कुछ बोलना लायक ज़्यादा है नहीं, कि ब्रांड आइडेंटिटी बनाना चाहिए, ब्रांड का लोगो वोगो अलग से आपका तुम्हारा बनाना चाहिए, और मार्केट का स्ट्रैटेजी थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरह से मार्केट भाग रहा है, किस तरह से तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे प्रोडक्ट को चलेगा। प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नोट इट, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज लाइक द गवर्नमेंट स्कीम्स आर नाउ गोइंग ऑन, एंड यू शुड इंश्योर दैट यू आर ऑल्सो डूइंग इन द गवर्नमेंट scheme like Startup India portal and DPPIT recognitions and many of the things. From there you can get tax extemporations and many of the things you can do it. So like I can provide the checklist also, if you want then put me a comment and I will be providing all the kind of the things. Thank you for today. Well, bye bye guys, and see you in the next video. Hope we will be making a family, great family. Thank you guys.